माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छे से जा बेटा। दो मैं उठाता हूँ। नहीं तेरे को देर हो गई, जा जल्दी। अच्छा माँ जाता हूँ। मौसी, क्या तोड़फोड़ करती रहती हो? अगर काम नहीं होता तो मत करो। घर पे जवान बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे काम कराओ। मैन साहब गलती हो गई, मेरे को मत निकालो। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई हो गई ना, फिर मैं घर में आराम करती। मत निकालो। Indeed, odds are many, but to be human is to dream, to believe, to fight. 21 नंबर। हाँ, कितना जमा कराना है? 5,000 रुपए साहब। अरे वाह, पहले तो तुम्हें 500 रुपए जमा करने में भी तकलीफ होती थी और अब 5,000 रुपए। अरे साहब, आजकल तो सरकार बहुत तरक्की कर रही है। अभी तो ज़मीन की जांच भी करवा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन उपजाऊ हो रही है। महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। सिलाई बुनाई का काम भी है, जिसकी वजह से देश की प्रगति हो रही है। अरे चल बस कर, अब इस पे छापा मार। अरे साहब, छापा नहीं मारेंगे, सही करेंगे। कलम दीजिए, बिटिया को स्कूल भेजते हैं, इतना तो सिखाएगी ना। अरे वाह। अरे देखा ना मैडम, आजकल अपने देश में कितनी तरक्की हो रही है। हाँ सर, बहुत जोरों शोरों से। Indeed, inhibitions are many, but to be human is to educate, to inform others. अच्छा, आ गया तू। शर्म नहीं आई तुझे चीटिंग करते हुए? तेरे कॉलेज से फोन आया था मुझे। जितना टाइम तूने चीटिंग करने में वेस्ट किया है, उतना शायद पढ़ता तो कुछ और भी कर सकता था। ये सब चीजें करते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? निकल यहां से। देख क्या रहा है? चल दफा हो यहां से। जी मिश्रा जी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मिश्रा जी। हाँ हाँ, वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम जी। Indeed, sermons are many, but to be human is to practice what you preach. Hey dude, आकाश कैसा है? अरे एकदम तेरे तरफ, फिट एंड फाइन। So, congratulations, Mr. America. अब तो यूएस का स्कॉलरशिप भी डन। So, कब जा रहे हो अमेरिका? तुम तो जानती हो, इंडिया छोड़ने का दिल तो नहीं करता, और वैसे भी इनसे ज़्यादा तो मुझे इनकी ज़रूरत है। Indeed, choices are many, but to be human is to choose to contribute, to help. जाकिर तू मोबाइल कब ले रहा है? लेंगे यार जब जरूरत पड़ेगी।
बच्चे बच्चे भी आजकल मोबाइल रखने लगे हैं। छोड़ यार, बच्चों का क्या है, शौक के माफिक लेते हैं। कब लेगा फिर? देखेंगे कौन सा लेगा, कोई भी ले लेंगे। अरे अच्छा है नया पीस। अच्छा अजान हो रही है, मैं तो नमाज पढ़ के मिलते हैं, शाम में मिलते हैं। हाँ ठीक। गाना बंद कर रहे हैं, नमाजची वेळ झाली आता. Indeed, differences are many, but to be human is to tolerate, to respect. As Karl Rowan had rightly remarked, learning has liberated more people than all the wars in history. When we look outside, we see the burning issues that have arrested humanity from top to bottom. When we look within, we see the burning light that gives us a vision to contribute to change in whichever way we can. We, the students of New Law Academy, believe that it is our responsibility not only to teach the students of law, but also to spread the awareness of law amongst all human beings in every strata of the society. We firmly believe that knowledge of law should not be limited only to the black robes arguing within the four walls of the courtroom. But as a learner of law, we shall be successful when we are able to educate even the laymen and lead them to realize the potential they have within them to stand up for their rights. My friends, as Gautama Buddha said, just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue. AKK New Law Academy, Pune is an institute of legal studies and research. It is aided by Government of Maharashtra, recognized by Bar Council of India and permanently affiliated to University of Pune. This college strives to provide a quality education, providing a various social-oriented programs, creating awareness among the people in the society. We have been organizing a free legal aid camps by going to nearby villages through the help of a NSS unit. And recently, our students have taken initiative to prepare a short film. Through this short film, they create social awareness among the people. Congratulate our law students for taking this initiative, and it is one of the methods to create social awareness among the people. In 1950, we got our constitution, and if we compare from that date onwards, the events happened with that of prior to 1950, even 1000 years. The progress achieved is unparalleled and 100 times more than what we could have we achieved 2000 years back prior to 1950. The reason being, we got the constitution, rule of law started working, citizens got freedom, freedom in respect of religion, freedom in respect of speech, freedom in respect of movement, freedom in respect of professing any occupation, trade, business. In 1950, 1% girls were taking education. Today it is 70% of the girls they are being educated. In 1950, in alone Maharashtra, if I can give example, only 3 medical colleges and 3 engineering colleges were there. Today we have 370 engineering colleges and 42 medical colleges. And you can see the enrollment ratio right from primary up to post-graduation in research centers, in defense, in milk production, in sugar production. All these things are happening not because of anything else, but because we know our potential. To that effect, if I can conclude,
In last 5,000 years, what hasn't happened has happened during last 60 years in India because of Dr. Babasaheb Ambedkar's constitution and sincere implementation of that constitution by our national leaders till today.